आप सभी का पुनः स्वागत है। शिक्षण अधिगम केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सूचना संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण एवं आकलन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला के चौथे दिन और इस कार्यशाला के 12वें तकनीकी सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे साथ इस सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर एस.बी. किशोर जी हैं, जो चंद्रपुर में सरदार पटेल महाविद्यालय में महाराज चंद्रपुर में सरदार पटेल महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के उनकी शिक्षण शैली से आप अवगत हो चुके हैं। कल आपने उनसे आईसीटी क्लास टेक्निक्स को किस तरह यूज करके आप अपनी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, इस विषय पर आपने उनसे मार्गदर्शन लिया। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शिक्षण अधिगम केंद्र अपने विश्वविद्यालय और शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। आज आपसे निवेदन करता हूँ कि ऑनलाइन कोलैबोरेटिव वर्क किस तरह से हम सभी ऑनलाइन रहते हुए एक टीम की तरह से भी काम कर सकते हैं, इस संबंध में एक प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हम इसको कैसे आजमा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय एस.बी. किशोर जी, मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, good morning to one and all. So, in the today's sessions, we will see how to work on a collaborative manner. So, in the today's sessions, we will discuss how to perform an online collaborative work in a real-time environment. Okay. So, before that, what do you mean by collaboration? Any one of you? In general. Yes. What is my collaboration in general? Working together. Now, why we are working together? To achieve certain objectives. Okay. So, it means in collaboration, what is the most important part? We are doing certain work in order to achieve certain objectives of either, when you are talking as a lecturer or as a teacher, we may call it a college work or university work. Okay. So, the action of working with someone to produce something is known as what? A collaboration. Now, what are the major steps of collaboration? आप सभी लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, नैक का काम करते हैं कॉलेज में, तो इसका मतलब इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क ओनली। तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कोलैबोरेशन? यस, एनीवन प्लीज। Okay, no issue. So, the steps of forming a collaboration start with a communications. Okay. So, what you are going to communicate, the kind of task that you are going to perform, or the kind of task that everyone needs to perform. Okay. So, based on that, what we are doing, we are giving a permission. It means we are giving a certain authority to each one of our individual, the kind of work they are supposed to do. So, it means we may call it what? A sharing the work. Then on the basis of sharing, someone is doing what? A certain task. And finally, what you need to check? You need to check whether the kind of work that has been done by someone else is proper or not. It means what you are doing, simply tracking. So these are the 4 stages of what? The collaboration. The first one is what? Communication. You are communicating the kind of work that you would like to get it from all. Then according to the seniority or authority or the kind of work that someone has to perform, you are giving what? A certain authority. It means you are sharing. And then based on that, you are giving what? A certain task. And at the end, what you are going to do? You are going to check the kind of work that has been done by someone else is proper or not. So that is what we are calling the tracking. So let's see one by one. Now, what is my communication? Now, it's a very general term. And how you can communicate, especially in online. By message. By message, by email, by mobile, by video conferencing tool. So there are a number of ways through which you are able to communicate. Okay. Yes, yes, sir. Now, what you are going to communicate? What to do? Some message. Okay. It means the first thing is what? What to do. Since we have decided that we need to perform certain work, so obviously you need to
explain that the kind of work that you would like to get from one and all. So it means what to do, what is the task. Then once you know the task, the next step is what? With whom you have to collaborate. How many people will be there in that collaborative work? Okay, and finally, how to do it. So these are the three steps, or these are the three things that you need to communicate with each and every one who are in that particular work. What to do, it means the kind of task that you need to solve, the kind of task that you need to perform, then with whom, who are the collaborator people, and based on that, and how to do it, the kind of technique that one need to follow in order to get that work done. Okay, so these are the three things that you need to communicate as a administrator or as a in charge of that particular work. And next step is what? Sharing. What do you mean by sharing? Yes. Sharing information. Sharing information. Yes. How you can share the information again? In the form of video, audio, or any file, PDF, etc. Good. Okay. So email is one of the way through which you are able to communicate, through which you are able to share certain information. Then with email, now question arises, what kind of permission that you would like to give to an authority in order while sharing the information? Whether they will be able to edit that particular information or not, whether they are able to alter that information or not, or they are only going to view the contents. So based on that, you are going to give what? A permission. It means you are setting the permission to individual collaborator. So we will see during the practical session how to do it. Then you are going to follow what? A certain tool through which you are going to perform these operations. Now, what are the various collaboration tools? Let's see. The Tweedla is one of the tools through which you are able to share what? A whiteboard. Then Google Drive, as all of us know very well, Google Drive is one of the collaborative tools through which we are able to access any information that admin would like to share with one and all. Then we know a very social networking site through which again we are able to do a collaborative work. And in the today's sessions, we are going to discuss about a document tools. So when we are talking about a document tools, what is the most important point that comes in our mind? What is the tool that basically comes in our mind? Document tool. It is an MS Office is one of the tools that automatically comes in our mind whenever you are talking about what? A document tool. Now, what are the basic drawback of MS Word in general? Any one of you? हाँ क्या बता? डॉक्यूमेंट मतलब MS Word के ड्रॉबैक क्या है? It is an Social media process. MS Word बोलो, MS Excel बोलो, PowerPoint बोलो, anyone. Social media. Pardon? It is offline. It is an offline, okay. That is the only one. So what is the drawback of offline mode? Okay, let's discuss about that. What is the drawback of offline mode? We can't collaborate. We have to email the file to each other and download and make editing and then again email to each other. That's We good. cannot collaborate in real time. That's good. Okay, so that is the basic drawback of what? An offline tools. So when we are talking about a document tool, we have what? A Google Doc, then Microsoft 365, and finally we have what? A LibreOffice. Apart from that, there are many other document tools. Okay, Google Doc, Microsoft 365, and LibreOffice. Google Doc is what? It's a free version. LibreOffice is an open source software, while Microsoft 365 is what? It comes under the paid version. So in the today's session, we will discuss about what? Google Doc. So question arises, when we are talking about an online tool, where our data are stored, it is stored on a cloud. Now what is basically in cloud? In general terms, forget about as a computer expert. In general, what is the meaning of cloud? It is one of the storage media where one is able to store that particular information, and from any other devices, one is able to access those data that has been stored in a cloud. Okay, it is not necessary that you should access the same data from the same PC from where you have uploaded.
So any computer connected to the internet can access what? A Google Doc file. As each user data is saved on a cloud system, user can access the same file from anywhere. It is not necessary that you should access from the same PCs or same devices. And user don't have to worry about the which versions of document is the most current one. It will always save in the Google Cloud. It saves all the versions of your file. Usually क्या होता है, जब आप वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, अज्यूम करते कि आपने कुछ एक पेज लिखा, उसके बाद आपने कुछ अल्टरेशन किया है, बाद में आपको लगा कि मुझे वो अल्टरेशन, अज्यूम करते कि आपने सेव भी की है, बाद में आपको लगा कि मैंने जो सेव किया था वो मुझे नहीं चाहिए. इज इट पॉसिबल टू गेट दैट बैक इन अ वर्ड? Yes, sir. Yes. How? You need to save the multiple files. Listen carefully again. मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने एक पेज बनाया है, उसके बाद आपने कुछ अल्टरेशन किए. Yes. एक पेज आपने लिखा, उसको सेव किया, उसके बाद आपने कुछ आपने अल्टरेशन किए. अल्टरेशन करने के बाद, मतलब अल्टरेशन मतलब आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ पोर्शन डिलीट किए, कुछ पोर्शन ऐड किए, उसके बाद आपने फिर से सेव किया. अब आपको लगता है कि मुझे जो मैंने अभी लेटेस्ट चेंजेस किए वो मुझे नहीं चाहिए सेव करने के बाद. Is it possible to get it back? No, sir. No. That is the drawback of what your MS Word. Yeah, but Okay. Google Docs में it's possible. Yeah, that is what I'm going to say. That is what I'm saying here. User don't need to have to worry about which versions of document is the most current one. We'll be able to access all the versions. Okay. That is the features of what? A Google Doc. Then, so let's discuss about the advantages of Google Doc one by one. Accessibility, like I earlier said, you will be able to access the Google file from any location, from any devices. Okay, it means you don't need to worry कि भाई मैंने इसी फाइल में सेव किया है तो मुझे उसी लैपटॉप से मुझे कॉपी करना पड़ेगा या फिर मुझे पेन ड्राइव में कॉपी करके कहीं और लेके जाना पड़ेगा. नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट टाइम. आप सिंपली एक फाइल अपनी बनाओ गूगल डॉक में और उसको आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव ए इंटरनेट कनेक्शन. दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट. देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? It's the free. Like I earlier said, Google providing all these features or basic this tool, all this tool like Google Doc, Google Sheet, and Google Slide at the free of cost. And the most important, import and export flexibility. Assume that you have created one file in Word way back. Now you want to export that file. You would like to import that file in a Google Doc. Is it possible? It's very easy. You don't need to think about the versions of that file. It is automatically import all those files and it will convert into the current form. That is the basic feature of what? Google Doc. For example, assume करते कि आपने 2014 में कोई फाइल बनाई है और उसको अभी आप 2007 में ओपन करने की कोशिश करते हैं. खुलती है क्या आपकी फाइल? Hello. Assume in Word you have created one of the file in 2014 and later on you are trying to open the same file in 2003 or in 2007. ये फाइल खुलती है क्या? Okay, you will find a certain drawback. It means it is not possible to access those files in earlier version. Yes. But that is not the case when you are talking about the Google Docs. You are able to access or where you are able to import all kinds of versions of the file very easily, irrespective whether it's a 2003, 2007 or 2014, no issue. Similarly, you can also export those files in various formats. Okay, so these are some of the features of what? A Google Docs. When I'm saying doc, it means all documents, slide, as well as the sheets that has been provided by the Google. Now, Google Docs as a collaborative part. Google Docs, it's like I earlier said, doc, sheet or slide allows you to add and remove collaborators when working on a specific document. On a specific document, you can add as many as collaborators you would like. I will show you how many collaborators you can add on a particular document. And at the same time, you will be able to remove those collaborators later on if you don't want. One can assign a various types of access to the collaborator based on the kind of work they are supposed to do. Based on that, you can give a various types of what? Access permission. It may be an editor, it may be a viewer, or it may be a commented. So we will see all of them. Then in addition, multiple users can access and edit the same document at the same time. So we will discuss how many collaborators you can add. Multiple users can access, it means what? On real-time environment. All the users will be able to access a single file only.
and it even allows user to see who else is in the document and making their changes as their work. Since it's a real-time environment, everyone will be able to see who is going to making certain changes, who is writing certain parts, who is trying to delete certain portions in a real-time environment. Now, the number of people in collaborations. 50 people can edit a Google Doc and sheet together. At the most, 50 people can edit the files. It means they can work like an editor on a single document. Google Doc allows you 200 simultaneous viewers on any type of Google Doc file. It may be a doc, sheet, or a slide, no issue. It means the 200 people can view your collaborative work. Of course, but they are not able to make any kind of changes, but they are able to view the files or documents. Is that clear up to? यहाँ तक कोई doubt? No, sir. Good. Now, task based on the permission. So now question arises, what kind of access mechanism one is able to give while sharing or while collaborating a work? The first one is editor. That is, when you have created a file, it means by default you are a what? Editor. At the same time, you can also make someone else also editor. So like earlier we have seen, you can make as many as 50 editors. So allow the person to make changes to the document or sheet or slides files, no issue. All the people are able to make any kind of changes if you have provided them an editor permission. The next one, commenter permission. Allow the person to leave a comment about the data in the doc or sheet, but not able to alter any data. Here alter means I am saying they are not able to modify, neither they are able to delete, but of course they are able to add certain things. Okay, so that is what we are calling what? A commenter. They are able to give a certain comments. And finally, it's a viewer permission. Allow the person to open and view the data in the doc or sheet, but neither able to do any editing nor able to leave any kind of comments. All these three permissions are clear? Yes, sir. तीनों परमिशंस क्लियर हो गए आप लोगों को? पहला क्या है? एडिटर, मतलब फाइल में वो चेंजेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस ही इज एबल टू डू. कमेंटेटर क्या कर सकता है? हेलो आ जाओ. हेलो. देन सेकंड वन इज कमेंटर. कमेंटर क्या कर सकता है? खाली उसमें ऐड कर सकता है, बट ही कांट डिलीट एनीथिंग, नाइदर ही इज एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट फाइल. And the last one is viewer. They are only able to view the documents and content. That's all. They are not able to make any kind of changes. Neither they are able to leave any kind of comments. Okay. Now, finally, what you need to do? A tracking. We have seen the 4 steps. First one is what? Communication. You need to communicate your task. Second one is what? Sharing. Third one is assigning a task. And finally, last one is what? Tracking. That is test whether all the entries that has been done by someone else is proper or not, or checking all the proofreading. All these things are comes under what? Tracking. Test, verify, validation, and accordingly you are also able to make what? Changes. And finally, at the end, when you feel that your entire work is over, you will be able to remove all the collaborators. Okay. So now how to do all these things during our practical session, we will see. So before that, first of all, try to understand a problem statement. Assume all of yourself as a head or in charge of certain work or committee, and you have to distribute the work to all your peers or colleagues of your department. Okay. And the task is what? It's very simple. For example, filling the internal marks of their respective subject of student for a class. Whether the question is clear? It's a very simple task. Being a head of the department or in charge of the department, it might be possible that, assume we are talking about say BSc first year, so it might be possible that it consists of somewhat 8 to 9 papers, and each teacher need to do what? He need to fill the internal mark of that particular paper. Now, in offline mode, how you are doing it? Kindly share your experience. In offline mode, how you are doing it? फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि 4 ही पेपर है. ओके, फॉर ए टाइम बिंग.
तो ऑफलाइन मोड में ये कैसे कैसे होगा? Sir, in the offline mode, we create an Excel sheet first. Good. Make the necessary columns and rows. If Good. necessary, we can also give a simple formula like summation of the Good. score or the Good. marks. Good. And then we email to each and everybody involved. Good. And then they download it at their end, fill up the marks, and then they email us back to compile. So again, collecting it and then compiling, copy pasting into it becomes a tedious job. Okay, it means now assume that you are going to send to all the 4 at once or one by one. You are sending to the first student and first lecturer will assign all the marks, then he will pass to the second one and third one, like that, or what? What we do at our level, we used to do before the Google Drive was that we were making the one common format, and the respective teachers would fill up for the roll numbers as well as for the papers involved, and then they would be emailing the in charge back, and then at our end we were copy pasting into one master sheet. Good. So that was a very long process. But what was the most annoying part was, by chance, if we made a mistake or if there was an editing done by the teacher and sent it another email, then compiling the latest version became a problem. That's the biggest problem. Okay. Okay. Anyone, someone else? If they are following certain other mechanism, please share your experience. We all are teachers. We all are here teachers only. So if you have certain other experience, kindly share it with me. Yes, madam. Information sharing through DOC or Excel sheet. In our students' marks, internal marks, and other activities to our students to faculty members to our hierarchy, the head of the institution, to proper channel to immediately to anywhere, anytime to access on this platform, to collaborate platform. Okay, it means we have a certain specific tools for that purpose. Okay, so now see how we are going to do it. So let's try to understand a problem. Sir, there is announcement regarding attendance. Okay, please, sir. Thank you, sir. सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आपके अटेंडेंस के लिए हमने लिंक आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप चैट बॉक्स में दिए गए लिंक को असेस करके अपना अटेंडेंस मार्क करें। उसके लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का प्रयोग करें। 3:40 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सो सभी लोग, मैं 1 मिनट फिर से मेरी तरफ से दे दूंगा। जल्द से जल्द काम करके फिर से वापस यहाँ पे आ जाइए अटेंडेंस देके, सो दैट एवरीवन विल बी एक्टिव। Yes, sir. So okay, I hope that all of you सभी लोग वापस आ गए। जी। Okay sir, thank you. So like sir has said, so many disadvantages. So let's see. So format is assumed. The name of the college, say SBK College Chandrapur. This is the format. Okay. Faculties ABC, BBC, CCC, DDD, EE. Roll number has been already specified. Paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4, paper 5. It means the lecturer with the name ABC. What he is supposed to do? He is supposed to fill the marks in this particular column. Okay, and so on. And at the head of in charge, what you need to do? You need to concentrate about the total mark percentage and result. Okay. Now, what's going to happen if you are doing this work in an offline mode? Non-collaborative work. Individual creations of file by every faculty member, right? सभी की अपनी अपनी फाइल बनेगी. Not only on your PC, but it might be possible that you are creating the same files on a multiple drives. आप पेन ड्राइव में रख रहे हैं, कॉलेज के पीसी पे रख रहे हो, फिर घर पे आ रहे हैं, घर से आप फिर से अपने लैपटॉप में कर रहे हैं. So it might be possible that you are creating a number of files of the same purpose. Then formatting may get varies. Someone may use the different types of styles and font size. Then merging all the work together is very big task.
Okay, merging all work is very big task, and finally, lot of time get involved in correcting the format. So these are the basic drawbacks of what? A non-collaborative work. Now, how to do a collaborative work? So far, any doubts? Okay, no issue. These are some of the references. Now, how to do a practical work. So in the today's sessions, we are going to discuss about how to start with the Google Sheet, then creating the layout of mark entry, then how to do a collaboration by copy link and share via mail. मुझे कोई भी 5 लोगों के प्लीज अपने मेल आईडी यहाँ पे मुझे शेयर कीजिए प्लीज. Any 5 people, kindly share immediately your mail IDs. बस 5 ही लोग चाहिए. जिनके मैं यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर रहा हूँ वो लोग थोड़ा अपना ध्यान रखो. आई एम अज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू आर ऑन लैपटॉप. Now let's see. Google Drive. Especially it is very much useful when you are doing a knack work. Google Sheet. Google Sheet is just like your Excel. All of you, just I'm assigning the roll number here. Paper 1, paper 2. Paper 1 के मार्क्स, paper 2 के मार्क्स बनने वाले हैं, paper 3 के मार्क्स, paper 4 and paper 5. All these 5 members are active. Hello. Hello. Sir, please read Yes, it. sir. Yes, Mail ID, sir. All these 5 members are going to remain active. Since I am going to share what? I am going to give them the sharing link. Now listen carefully once again. मैं कुछ लोगों को और ऐड कर रहा हूं उसमें. Now यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या है, यहाँ पे शेयर. ओके, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 1 by 1. नेम ऑफ द स्प्रेडशीट से मार्क्स एंट्री. Now share. The first one, paper 1 marks, Rolly Singh. सर स्क्रीन
not visible. Huh? Sir, it's visible. Okay. So see what I have done. Sharing कर रहा हूं मैं. First one. Okay. Rolly Singh. The permission that I am giving you, it's an editor. Now please observe that we can also give a viewer as well as commenter. फूल खाल के पूरा सही करा है लो अभी जल्दी लगाओ खोलो अभी लगाओ Please keep mute. Now second one. फिलहाल एंट्री स्टार्ट नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलता हूं. जस्ट वेट. Again, editor permission I am giving. For third paper, Sharma. An editor. For fourth paper, Mr. Sanjay Sharma. And the last one, Sahayaji. All of you are the what? Editor. Now, all of you are ready? All 5 members? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, kindly start entering the marks. Go little bit slow. Paper 1, paper 2 सब अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलम में जाके एंट्री करेंगे. Yes, आपको ये मेल आया होगा. देखिए आपको मेल आया होगा. मेल से आपको जाना है यहाँ पे. आप सभी को मेल आया है. Sir, I didn't get mail, sir. 5 लोगों को भेजा है मैंने. No, I didn't get. No, I did not get it right now. रॉली सिंह, देखो रॉली सिंह को मिला है. नहीं सर, मुझे भी नहीं मिला. I also didn't get, sir. Sahaya Jiji. एक शर्मा मिनट. अलका सर. सर मिला है लेकिन एडिटिंग नहीं हो रही है एक मिनट डन. फिर से मैं कर रहा हूँ. एक मिनट. Sir, Sanjay wrote Sharma didn't receive it. मिल गया Maybe आपको? because of the server's problem. Just a moment. I filled it. Now I'm waiting for it. Yeah. Again? This is not Sir, I. again, same name, sir. Oh. कितने जनों को मिला है अभी प्लीज? 5th and 6th say same name, sir. No, I did not get it right now. All 5 members? No sir, I haven't received it yet. Sharma? Sir, On fourth, there Yes sir, is- Sharma Alka 1998. I think sir, there 4 is. and 5 same number सर name. आई रिसीव्ड रोली डॉट सिंह हाँ तो मैडम यू कैन स्टार्ट द एंट्रिंग. I think on the fourth there is minor mistake, that is ac.in. In the Okay. AC.in. yeah, That that one. is why I didn't get it. Okay, last one is also same problem. Mm-hmm. I'm changing once again. AC.in. Okay. Now. Yeah, we got it. Okay. तो अभी आप क्या कर रहे हो? Now I have to add marks in the fourth column. Just a moment. Let's see. Out of how much? Maybe 50 out of 50? Assume 50 marks paper only. Okay. Okay. Paper 2, paper 3. नो सर, मेल नहीं मिला है. नंबर 2 वाला. Mohan Murari. यस सर. Number Take 3 one. also sir, I have not received it yet. सर Okay. नंबर 1 आई रिसीव्ड बट उसमें एडिटिंग नहीं हो रही है सर
व्यूवर है। सर मोहन उसमें मुरारी, नंबर please. कैसे चढ़ाएंगे? Sir, number 4, just wait. Number 4, just wait. Yeah, I am doing it. Now just wait, little bit wait, so that other can feel the marks, so that Okay, everyone will be able to see. Mhm. Madam, Roli madam, please check now. जी सर। अभी आपको फिर से मेल आया होगा एक। हाँ नहीं नहीं सर, मिल तो गया है लेकिन उसमें नंबर एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। नंबर ऐड नहीं कर पा रहे। हाँ उसमें हो नहीं रहा है। ओके, आई एम ट्राइंग वन मोर। हाँ एक बार सर। पंडा, आई एम एडिंग वन मोर, मिस्टर पंडा कृष्णा। जी। Yes, sir. अगेन एडिटर परमिशन है, सेंड, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज स्टेटस मोहन मुरारी सर? नंबर 3, once again I am trying. Yes, सर sir. नंबर 2 I'm सर मैं waiting. मोहन मुरारी, एंट्री नहीं हो रहा है सर। आपने जो मेल दिया है वो मैं वही भेज रहा हूँ, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। Okay, sir. Okay, it's fine. जी जी जी। प्लीज एटलीस्ट 2 जनों का तो भी आना चाहिए, एंट्री साइमल्टेनियसली दिखना चाहिए। Sir, I received your mail. ओके, प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली मैडम। Okay, sir. सर एडिट नहीं हो रहा है, रोली डॉट इन। नंबर 1 जी नंबर 1। मैडम एक बार चेक कर लो मेल आईडी जो यहाँ पे लिखा है, roli.singh81@gmail.com। जी जी एक बार मैं भेज रहा हूँ, चलो देखते हैं। एक बार हाँ सर दोबारा से। तो आप फिर से नया वाला मेल ओपन करना। ठीक ठीक ओके सर ओके। ना देखो यहाँ पे टॉप में देखो 3 लोग कोलैबोरेटर में दिख रहे हैं, नंबर जी 1, नंबर 2, दोबारा नंबर 3। देखिए अभी नंबर 3 का भी स्टार्ट हो गया एंट्री। सर एक मिनट खुल रहा है। ओके ओके, नंबर 4, काइंडली मेक स्मॉल चेंजेस समवेयर। नंबर 4, Yeah. सभी लोग देखते चलो क्या हो रहा है वहां पे। ऑल ऑफ यू, दिस इज रियल टाइम एनवायरनमेंट में चालू है, रियल टाइम एनवायरनमेंट में एंट्री चालू हुई है। मतलब आपके मल्टीपल फाइल्स नहीं बन रहे इसमें। उन लोग के नंबर आ रहे हैं, नंबर। सर मैं कृष्णा पंडा, मुझे किस में एंट्री करनी है? पेपर 1, पेपर 2? पेपर 2 में कर दीजिए। ओके सर। Sir, number 4 and number 5 mail IDs are same, so I didn't get mail. मेंबर एक मिनट। 4 and या तो आपको नहीं मिला आपका नाम मैडम, प्लीज आपका मेल आईडी। sahayajiji@gmail.com. व्हाट्सएप पे आपने इसमें भेजा है ग्रुप में? Yeah, you copied, but या दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। जी यस, आई गॉट इट। सर प्लीज चेक नंबर 1। यस मैडम, जस्ट मोमेंट। यस सर नंबर शो हो रहा है। हाँ नंबर 1 स्टार्ट कर दीजिए। सर मैंने किया है, वहां पे शो हो रहा है स्क्रीन पे। नंबर 1 का भी कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा कुछ नहीं आ रहा, एक मिनट चेक करिए। So I have completed my entries. Now what to do? Just wait, madam. Paper 5. Paper 5. Gigi, madam, you can start on paper 5. नहीं हो रहा है सर। Paper 5. yes sir, I will do. Now what I am going to do? See, let's see. Mr. Ajay Kumar, are you there? और ममता मेहरा मैडम, आर यू देयर? ममता मेहरा मैडम, आर यू देयर? क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? सबने देखो इन लोगों ने नंबर टाइप किया ना, ओके तो रुको उसको दबाना है। बबीता शर्मा मैडम, आर यू देयर? आप इसको डाउनलोड करें। Sir, I have sent my email. You can check that. हेलो, ओके पेपर 5 इज रेडी। खाली नंबर 1। नंबर सर नहीं हो रहा है, एडिटिंग नहीं हो पा रही है। ओके, देन आई विल ऐड समवन एल्स।
Okay, okay, sir. Okay, sir. Mr. Panda Krishna sir, are you there? Yes sir, I am here. Okay, so I am पेपर नंबर sharing 2 का मैंने मार्क्स भर दिया है. 2 का भर दिया. Okay. तो अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार. Yes, sir. I'm here. Okay sir, so I am sharing with you. Okay, sir. पेपर 1 के मार्क्स आपको एंट्री करना है. Now I am adding few more people, but not as an editor. Let's see. Mr. Vilas Tembunes sir, are you there? Dr. Soji Singh, are you there? लोग खोल के चले जाते हैं. Mr. Satish Kumar Mishra, are you there? Sir, you can see the new chat. Yeah, that is what I am thinking. Okay. Soni Sharma. Capital yes है मैडम. सोनिया शर्मा. Now see what I am doing here. Mr. Sonia Sharma is working as a commenter. Okay, she is not an editor. Then I am adding few more people. Ranjana. Assume that they were working like a moderator. Yes, Kumar, sir. Sir, seat 1 is not editable, sir. Which one? Number 1, sir, is not editable. There is something problem, sir. Okay, so forget about that. No issue. Now, हमने 2 जनों को ऐड किया अभी यहाँ पे. देखो, डॉक्टर सोनिया शर्मा एंड मिस्टर कृष्णा. अब मैं आपको एडिटर थे. देखो यहाँ पे मिस्टर कृष्णा पांडा इज एडिटर. आपने कौन से पेपर का मार्क्स एंट्री किया सर? सर मैंने पेपर 2. अभी मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे कमेंटर. यस सर. देखो मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ. देखिए ऑप्शन, एक बार आपने असाइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग एंट्री कर रहे हैं. नाउ अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी को, सभी लोग एट ए टाइम जैसे ही मैं यस बोलूंगा सब एक साथ आपको एंट्री करना है. देखो सबका कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नाम भी दिख रहा है. देखो ये मार्क कौन एंट्री कर रहा है? मिस्टर कृष्णा पांडा, अलका शर्मा मैडम एंड प्रोफेसर संजय शर्मा. ओके, और यहाँ पे मिस्टर 5 इज नो मोर देयर. सर आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि आप जब बोलोगे तो हम क्या करना है, क्योंकि आपकी वो आवाज है ना वो इको हो रहा है सर. ओके जस्ट अ मोमेंट. नाउ इट्स ओके. एक बार बोलिए सर तो पता चलेगा. हाँ ओके सर. आपको क्या करना है एट ए टाइम 15, 16, 17, 18. ओके, चारों लोग एक साथ मार्क्स एंट्री करेंगे और सब लोग देखते चलो कैसे हो रहा है. सब लोग अपने अपने पेपर से मार्क्स एंट्री करो. देखो कलर चेक करते चलो सबके. Yes, sir. That is what and real time environment. Is that clear? Yes, clear. That is it. Now अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी देखो मैं सभी को, आप सभी एडिटर थे, मैं अभी आपको सबको कमेंटर बना रहा हूँ. अलका शर्मा, देन मिस्टर वेणुगोपाल राव, देन जीजी सहाय मैडम. 3 जनों को, ठीक है, और मिस्टर कृष्णा जी को भी मैं कमेंटर बना रहा हूं. अभी आप मार्क्स चेंज करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है क्या. नहीं हो रहा है. नहीं सर नहीं हो रहा. योर एक्सेस हैज एक्सपायर्ड. Yes. So now
हो गया, ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। प्लीज ऑल ऑफ यू नाउ। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ सबको, या फिर उनको मैं ओनर भी बना सकता हूँ, परमानेंट एडिटर, ओनर एंड व्यूअर। आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को व्यूअर भी बना सकते हैं। तो स्पेशली ये कब यूजफुल है, ये पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Good. So what you can do is that on a real-time environment, you are able to do such kind of work of filling the marks. But Rather than, yes, once you make someone owner, he can do all these activity. He can make anyone. Once you have made the owner, not that is what I am saying. Depending upon, if you want to make someone owner, you can. Commentator, editor, anything. Once you have made someone, it is not mandatory. Owner, it is not mandatory to make someone owner. But if you want to assign certain work to someone else, suppose if you are assigning a certain work to check whether all the marks or entries has been done properly or not, or make certain changes in the formulas. So all those things can be made by someone else also on the behalf of you. Okay, and at that time he can work as an administrator basically for that. Obviously, if you want to make, if you are going to make him as a owner, then he can make work as a administrator. Later on, you can also remove him, no issue. He can also remove us also. Of course, the vice versa is also there. Okay. Because if you are making someone administrator, obviously he has the right to make now since he has become the owner of this file, so he is also able to make any kind of changes. Okay, that thing is always there. But being in charge, like I earlier said, being a head of department or in charge of certain work, what you are going to do, you are going to distribute a certain work. Okay, now take another example. Now this is what your Google Doc, and assume it's your NAC work. Okay, all of सभी लोग college teacher ही है ना, or someone or working there as a school teacher also here. I think university teachers, college teachers. Or college teachers only. Okay. So in NAC we have a total 7 parts. So usually क्या होता है? Sometimes part 2 is depend upon part 3 depend upon part 5. So in that case हम work कैसे करते हैं in general में? This is part 1. assume करते हैं कि यहाँ पे part chapter 1 का मेरा पूरा part है, या chapter part 1 बोल सकते हैं आप इसको. Chapter 2. Okay. Now यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फिर से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास शेयर. नाउ फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? 5 लोग को ऐड कर रहा हूँ. मिस्टर मोहन मुरारी, डॉक्टर सर मोहन मुरारी. Sorry, it's the name of the file before. Suppose NAC. Yes, sir. नंबर 2 वाला छोड़ दीजिए सर, मेरा नेटवर्क सही नहीं है. Okay, sorry. Mr. Sharma. Done. Okay. पार्ट 2 के लिए मैं ले रहा हूं मिस्टर संजय शर्मा. I am very much yes. हाँ. पार्ट 2 के लिए ठीक है. पार्ट 3 के लिए ले रहा हूं मैं सहाया मैडम. She is not here. Okay, let me copy. Mr. Panda Krishna. नंबर 3 के लिए ठीक है. एंड नंबर 4 के लिए मैं ले रहा हूं फिर से आपको तीनों जनों को मेल आ गए होंगे. प्लीज ओपन कर लीजिए. जी सहाया मैडम.
पार्ट 4 के लिए। आप योर एडिटर। हाँ Sir, I haven't received your mail. Alka Sharma. अलका शर्मा, अलका शर्मा, एक सर मिनट मुझे भी नहीं मिला ईमेल। प्रोफेसर संजय शर्मा ज्वाइन हो गए हैं। 2 पार्ट 4। सहाय मैडम आपको मिल गया? 2 जन आ गए हैं, ठीक है, 2 जनों का आ गया है। sir, मिला। हाँ Yes, I received, sir. यस ओके, 2 जनों को आ गया है। देखो आपके वहां पे टास्क दिख रहे हैं, मिस्टर संजय शर्मा दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिस्टर सहाय मैडम दिख रहे हैं। पार्ट 1 किसको था? अलका शर्मा सर नहीं आया अभी तक। नहीं आया, ओके, लेट मी चेक। मेल आईडी भेज रहा हूँ। पार्ट 1 था ना आपका? मेल आईडी प्रॉपर है मैडम? शर्मा अलका 1998। मेल आईडी सही है सर। ओके, चेक कर लीजिए एक बार, अभी आया होगा। और मिस्टर कृष्णा सर आपको? हाँ सर, मैंने अभी रिफ्रेश किया लेकिन अभी तक आया नहीं है सर। Received sir. ओके गुड, I got it. ओके। पांडा सर, यस एम यस कृष्णा सर, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। नहीं आया सर। ओके, अगर मेरे में ट्राई करने से भी नहीं आ रहा तो आप किसी और प्रतिभागी को भी मेरे जगह पे ले सकते हैं सर। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। फिलहाल अगर देखते अगर आ गया तो ठीक, ना तो 3 जनों से अपन चालू करेंगे। हाँ, पार्ट 2 3 जनों को आ गया है। देखिए मिस्टर अलका शर्मा मैडम को आ गया है, संजय शर्मा सर को आ गया है, और सहाय मैडम को आ गया। प्लीज जस्ट राइट योर व्यूज अबाउट द ओवरऑल वर्कशॉप दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय द लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी। जस्ट राइट few or 2 or 3 lines. It's not editing. हाँ, यू आर एडिटर ना, आप सब अपने अपने इसमें लिख लीजिए। I am editor, but it's not writing. हाँ सर, अभी मेरे में आ गया है सर। ओके सर, स्टार्ट कर दीजिए। Part 2 is not working. It's not editing. पार्ट 2, पार्ट 3। No, part 2. There is a red symbol. पार्ट 2 में नहीं आ रहा है, एक मिनट। No, it's not writing. It was writing previously, but now it's not. नंबर 2 ना, नंबर 2 Last. नंबर 2 का नाम? Sanjay Sharma. Yes, number 2. All of you are editors. There is no issue at all. I don't know why it is not coming. Initially it came. Okay, no issue. Okay, that's good. Now, Alka madam and Krishna sir, just wait. Alka madam, you just make the changes in part 3, and Krishna sir, you just make the changes in part 1. Few changes, minor changes. Okay sir. Okay sir. ओके सर। Rest of you just observe. अलका मैडम जो पार्ट 1 में थे अभी पार्ट 3 में चेंजेस कर रहे हैं, और शर्मा सर जो पार्ट 3 में थे वो पार्ट 1 में चेंज करने जा रहे हैं। यस सर, मैंने चेंजेस कर दिया। ओके, इट मींस यू आर एबल टू मेक द चेंजेस। ओके, नाउ अब मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे। अलका मैडम, यू आर जस्ट वेट, यहीं पे वेट कीजिए, आप वहीं पे रही वैसे। यस सर। अलका मैडम को मैं एडिटर था तो मैं उनको कमेंटर कर रहा हूँ। ओके, सेव कर रहा हूँ। अभी आप चेंजेस करने की कोशिश कीजिए, डिलीट करने की कोशिश कीजिए। पहले वो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ना, इंटरेस्टिंग एज वेल, उसको डिलीट करने की कोशिश कीजिए। सहाय मैडम जस्ट वेट, नो इशू। I deleted that particular line. After that, I received a notification that your that's expired. Okay, so it means you are not able to make any kind of changes. आप बीच में यहाँ पे सेशन जो लिखा है ना, all the aspect of this session,
Yeah. सेशन की जगह वर्कशॉप लिख दीजिए. Okay. Try to delete. हो रहा है क्या? No way. I can't do any change. Okay, you are able to put, but you are able to write something. आप लिखिए वहां पे सेशन के पहले Just a minute. Let. सेशन के पहले वर्कशॉप लिख लीजिए. No, sir, I can't add anything. I can't add anything. You can. Being a committer, you can able to add certain comments. It's not. Make it properly. I tried, but it's not. I'm not able to do that. Okay, now let me try. Pandya sir. Krishna sir, now you try just. मैंने आपको कमेंटर बनाया. यहाँ पे सेशन की जगह वर्कशॉप लिखना है पार्ट 3 में. परमिशंस आर अपडेटेड. देखिए ऊपर में मैसेज आ रहा है, परमिशंस आर अपडेटेड. मतलब यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा. लास्ट एडिट वाज मेड बाय 2 minutes ago बाय मैडम. ठीक है, अभी आया योर एक्सेस हैज एक्सपायर्ड. ओके. Yeah, the same thing happening. Okay, so now coming back to our original part. So all of you now बाहर आ जाइए सब. So that is what the basic advantage of what working on a real-time environment, rather than creating the multiple files at multiple locations on your pen drive, then on your laptop, then coming back to the college again on the desktop. So you don't need to create all those work. What you need to is that you need to create a single file and you need to share with all other people. But the only thing that you need to remember here is that the kind of permission that you would like to assign to individual, that is the most important part. Okay, it might be possible that someone is simply want to view the content, but you don't want to give any kind of permission for them to what edit. So in that case, what you can do, you can give a permission of what only viewer. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. अगर आप मल्टीपल फाइल बनाते तो इट्स सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइमिंग, वेस्टेज ऑफ स्पेस, वेस्टेज ऑफ मल्टीपल फाइल्स. मल्टीपल कौन सी अपडेटेड फाइल हमको ये भी नहीं मालूम रहेगी. लेकिन अगर एक ही सिंगल फाइल में हम क्या कर रहे हैं, सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ व्हाट वर्किंग ऑन ए कोलैबोरेटिव वर्क. सो दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल. लाइक नैक में भी बहुत बार क्या होता है कि पार्ट 1 का कुछ पार्ट हमको पार्ट 3 में यूज करना रहता है. तो पार्ट 1 से फिर पार्ट जो भी पार्ट 1 पे जो काम कर रहा हूँ उसको फाइल मंगो, फिर उसमें क्या लिखा है वो देखो, फिर उसके हिसाब से पार्ट 3 में चेंजेस करो. इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 3 सब एक ही फाइल में रहेंगे. तो इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क. So this is an examples of what doing a collaborative work. Dear participants, if you have any doubts right now over here, you can ask me. Sir, I have one doubt. Have you given any time limit for editing? No. No. Unless and until someone is making changes in your permission, you are always working as an editor. Because we received some certain message, no sir, your access is denied or something. Yeah, since I have changed over here, no, I made all the changes. Okay, that's fine. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Thank you very much, sir. आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.